What is up, ladies and gentlemen? हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन डोटा 2 टीम के कॉमनवेल्थ के अमेजिंग रन के ऊपर, जहां पे उनको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ नज़र डालेंगे कि किस तरह से 7C Esports और टीम सोल PMWI में हमको नजर आएंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट डोटा 2 की वेल नोन टैलेंट शीवर अब हमें नजर आएंगी वैलोरेंट के अंदर, एज शी इज मेकिंग अ डेब्यू विद द EMEA LCQ। एंड इन द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर डालेंगे कुछ और डिटेल्स पे अबाउट द न्यू Valorant's upcoming agent. So without wasting any further time, this is Super Johnny and you guys are watching Esports 360. What is up? What is up? What is up, ladies and gentlemen? एक बार फिर से स्वागत है Esports 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। कुछ ही दिन पुरानी बात है, बट आई एम प्रीटी श्योर अब तक तो सबको ये बात पता चल चुकी होगी कि इंडिया की डोटा 2 टीम लेड बाय द लेजेंडरी सपोर्ट नो चांस हिमसेल्फ कॉमनवेल्थ Esports चैंपियनशिप 2022 में इन लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है अपने लिए बाय बीटिंग द टीम फ्रॉम न्यूजीलैंड इन अ BO3 सीरीज। और वहां पे भी एक डोमिनेटिंग स्कोर लाइन थी 2-0। India that win this game too, and they are going to claim themselves the bronze medal as they pit themselves off this insane game 2 at 51 minutes. I mean, what a game, especially after game 1. You know, we talked about how New Zealand, they really struggled in that game 1. They were kind of on the back foot the whole way. This game 2 was absolutely nuts. It was so back and forth, and to go from being in that game 1 position where they were so far behind to giving themselves a chance to win this game 2 when they were behind in game 2 for a long way. You know, don't forget this laning stage went so poorly for them. But I mean, completely fair play to India. I think they've shown here today that they are definitely deserving of that bronze medal. For sure, and we totally saw on the graph as well, it could have gone either way. It was 50-50 on either side of the team, and it was India who were able to claim themselves that Roshan there. It was the decider Roshan able to get the Aegis onto the Phantom Assassin, and they were just able to deliver, especially Abby there on the puck, just disrupting the entirety of New Zealand in the backlines, just allowing. एंड अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि टीम सोल और 7C Esports को क्लियर कर दिया गया है टू पार्टिसिपेट इन द PMWI एंड द आफ्टर पार्टी। BGMI के बैन होने के बावजूद दोनों टीम्स को अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल चुका है टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। टीम सोल को PMWI में डायरेक्ट इनवाइट मिला था और वहीं 7C Esports ने BMSG जीतकर इंडिया का स्लॉट अपने नाम किया था फॉर द आफ्टर पार्टी इवेंट। दोनों टीम्स के नाम PUBG मोबाइल Esports के ऑफिशियल पेज पर शामिल थे। जितने भी लोग डोटा 2 फॉलो करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो सब शीवर को अच्छे से जानते होंगे। शी इज वन ऑफ द बेस्ट डोटा टैलेंट्स इन द वर्ल्ड। काफी लंबे अरसे से वो इस गेम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब हमें एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है वेयर शी हैज डिसाइडेड टू मूव टू वैलोरेंट। और अब ये हमें नजर आएंगी EMEA के LCQ मैचेस में। शीवर ज्वाइन कर रही है VCT की ऑन एयर टैलेंट्स टीम एज अ होस्ट। VCT EMEA LCQ विल बी हर फर्स्ट एवर वैलोरेंट टूर्नामेंट। शीवर को सब जानते हैं फ्रॉम द लेजेंडरी डोटा 2 टूर्नामेंट्स लाइक ESL 1, DreamHack एंड द इंटरनेशनल। बट अब वो दिखेंगी एक नए अवतार में एंड द फैंस आर स्टोक्ड अबाउट इट। एंड आई नो आप में से ज्यादातर लोग जितने भी ये न्यूज शोज देखते हैं, सबको कुछ ना कुछ लीक्स चाहिए होते हैं। वेल, पिछली बार हमने कुछ लीक्स दिए थे वैलोरेंट के अपकमिंग एजेंट के बारे में, और अब हमारे पास थोड़े और क्लूज हैं। वैलोरेंट अब धीरे धीरे ओमेगा अर्थ और उससे जुड़ी स्टोरीज को एक्सप्लोर कर रहा है, एंड वरुण बत्रा लाइज इन द सेम लाइन। हाल ही में PBE के रेंज में एक यूनिक सिंबल देखने को मिला था और कहा जा रहा था कि इट्स लिंक टू वरुण बत्रा और एजेंट 21 एज इट्स कॉल्ड नाउ। और YouTube चैनल Valorant अपडेट ने इस सिंबल को कंपेयर किया था हमसा हैंड से, which looks quite similar in fact. But it also looks like something from Hindu origin. I fully understand the Hamsa hand is used by multiple religions, but for this video's aspect, we're going to talk about how it relates to Hinduism, and we're going to talk about the 5 chakras. It's all going to root back to that email, but let me just paint the picture. The 5 chakras are represented by 5 different fingers on the Hamsa hand, each finger representing a different element. We have the fire element, the air element, the ethereal element, the earth element, and the only one we don't have in Valorant currently is the water element. And if you see that Reddit post I dug up from 2 years ago, a Riot dev that works on the
agents talked about how we didn't have a water-based agent and that Sage was indeed the earth-bending agent. So if we go back to the Hamza hand, you'll see that the only finger we're left with is the pinky finger, and that is the water element, which brings us back to the email where we take a look at the name of the person they're looking for, Varun Batra. So after diving through the last name and finding the Indian origin, going through the whole Hamza hand, I decided to look into the first name, so I googled Varun Hindu, and the first thing that came up was a god called Varuna. And to further expand on our water-based agent theory, you'll see that Varuna happens to be the god of the ocean. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टू मेक श्योर आप कोई भी कंटेंट नॉर्डविन गेमिंग का मिस नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.